प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आवां आहियां असद मुमताज़ रिड। नाज़रीन, कोरोना खां पोइ माकड़ जा मुल्क ते हमला जारी आहिनि। इंडियन जी रिपोर्ट मूजिबि मुल्क में 60 ज़िला जेके आहिनि माकड़ जे हमलनि जे असर हेठां आहिनि, जंहिंजो मुल्की मैशत मजमूई तौर ते 38%, जॾहिं त सिर्फ़ु सिंध जी ज़रई मैशत जो 70% जेको आहे उहो माकड़ जे हमलनि जे करे तबाह थी सघे थो। रबी ऐं ख़रीफ़ जे ॿिन्हिनि फसलनि जो 797 अरब रुपया जेके आहिनि उहे माकड़ जे हमलनि जे करे तबाह थियण जो अंदेशो आहे। ॿिए पासे आलमी इदारे वर्ल्ड बैंक ऐं वर्ल्ड फूड एजेंसी जेका आहे उन ख़दशो इज़हार कयो आहे त जेकॾहिं माकड़ जा हमला न रोकिया विया त पूरी दुनिया में 4 करोड़ माण्हू ईंदड़ ॾींहंनि में खुराक जी खोट खे मुंहुं ॾेई सघनि था। सिंध में माकड़ जा हमला किथे आहिनि, केतिरी एराज़ी ते माकड़ फैलियल आहे, सिंध हुकूमत छा पई करे, उनजी हिकमत अमली कहिड़ी हुजणु घुरिजे, आबादगारनि जा कहिड़ा मुतालबा आहिनि, अॼु हुन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असां सां गॾु प्रोग्राम में शामिल आहे साईं इस्माइल कुंभर, पाण ज़रई माहिर आहिनि, ऐं उन्हनि सां गॾु मौजूदु आहे शहज़ाद नायो, पाण ज़हरीला जीत जड़नि जा ख़ात्मे जा जेके आहिनि उहे माहिर आहिनि ऐं पाण PhD कई अथऊं इन ई सब्जेक्ट ते। साईं इस्माइल साहिबु अस्सलामु अलैकुम। अच्छा इस्माइल साहिबु, तव्हां खां प्रोग्राम जी शुरूआत कयूं था। इहो ॿुधायो त हिन वक़्तु जेका आहे माकड़ सिंध जे केतिरनि ज़िलनि में फैलियल आहे, केतिरी एराज़ी ते फैलियल आहे? साईं तमामु बहितरीन। पहिरीं ॻाल्हि त सिंध जो आबादगार ख़ासि करे बेज़मीन हारी हिन लॉकडाउन जे सबबु मक़ामी तौर आलमी ज़रई मंडी बंदि हुअण सबबु पंहिंजी ज़रई पैदावार जो सही लाभ मुतासिर न करे सघियो। पर गॾोगॾु मथां पंहिंजी सीज़न बची चुकी आहे, मार्केट बंदि आहे, आलमी मार्केट बंदि आहे, ऐं गॾोगॾु हींअर जेको डिज़ास्टर जेको पैदा थियो आहे माकड़ जो, उहो तक़रीबन सिंध जा जेके से माना गवर्नमेंट ऑफ सिंध जे ज़रिए 9 खां 10 ज़िला आहिनि, पर ओवरऑल जेके से हिन वक़्तु 15 ज़िला सिंध जा जेके मुतासिर आहिनि ऐं लखें एकड़ ज़मीन जेका सां मुतासिर थी रही आहे। जॾहिं त सिंध गवर्नमेंट जे तरफ़ां जेके अंक कढा विया उन में बि इहो चयो वियो आहे त हिन वक़्तु जेका सर्वे कई वई आहे उन में ओवरऑल पाकिस्तान में 4,87,900 स्क्वायर किलोमीटर जो लाइ माकड़ जे हवाले सां, त उन में जेको सो सर्वे कयल जेका ज़मीन आहे उहो 1,24,299 जेको निहायत हानिकार आहे फसलनि जे हवाले सां, ऐं अहिड़े नमूने ट्रीटेड एरिया जेका कई वई आहे उहो 8,843। त हींअर जेका गवर्नमेंट ऑफ सिंध जेका चयो आहे त तक़रीबन 1408 एकड़ जेको माना कराची, खैरपुर, सांकंड, नवाबशाह, कचकोर, कंदकोट, शहीद नज़ीराबाद, मटियारी ऐं जामशूरो, हैदराबाद, थर, बदीन, उन्हनि ज़िलनि में जेको सो हुननि स्प्रे कयो आहे। पर ओवरऑल ॾिठो वञे त आलमी जेका तव्हां ॻाल्हि कई आहे त जेको पाकिस्तान में 38% माकड़ जी जेका सा हिन तबाह करण जे करे तक़रीबन जेको माना सिंध जा 25% सिंध जा इलाइक़ा, 60% बलोचिस्तान जा इलाइक़ा ऐं 15% पंजाब जा इलाइक़ा, त उहे हिन वक़्तु माकड़ जे वक़्तु चढ़ियल आहिनि। ऐं उन में जेको तख़मीनो लॻायो वियो आहे, ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त गुज़िरियल जेका रबी वारी जेका सीज़न असांजी गुज़री वई आहे उन में बि जेको गवर्नमेंट ऑफ सिंध जे अंक करंट 13% डैमेज थियो आहे, त उहो 200 बिलियन जो नुक़सानु थियो आहे। उहो जो जेकॾहिं 15% डैमेज थिए थो ॿियनि फसलनि ते, त उन में 205 बिलियन जो नुक़सानु थिए थो। जेकॾहिं 25% जो नुक़सानु जो काथो लॻायो वञे थो, त जेकॾहिं ज़राइत ते जेकॾहिं 25% जो नुक़सानु आहे त 353 बिलियन रुपया जेके से माना ओवरऑल ज़राइत खे नुक़सानु आहे। त अहिड़े नमूने जेका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जेका खाद्य खुराक तंज़ीम जी तख़मीनो लॻायो आहे त रबी जे फसलनि खे 353 अरब ऐं ख़रीफ़ जी फसलनि खे 464 जो नुक़सानु थी सघे थो जेकॾहिं माकड़नि ते कंट्रोल न कयो। पर हींअर 15% ताईं लास थी चुका आहिनि। त अहिड़े नमूने हिकु तरफ़ जेको कोविड जेका आहे 19 जेका आहे उन ई सिंध जे आबादगार ते हेल्थ। अच्छा इस्माइल साहिबु इहो ॿुधायो त सिंध हुकूमत हिन वक़्तु ताईं केतिरो स्प्रे कयो आहे, केतिरी एराज़ी ते हुन स्प्रे कयो आहे हिन खे बचाइण लाइ? साईं सिंध गवर्नमेंट जेका हींअर कल्ह अंग खणंदा आहिनि उन ई में तक़रीबन 1408 एकड़ जेका स्प्रे करायो आहे कराची, खैरपुर जेका तव्हांखे ज़िला ॿुधायो उन्हनि में, ऐं जॾहिं त हुननि जे मुताबिक़ 9 ज़िला मुतासिर थिया आहिनि। त अहिड़े नमूने गुज़िरियल जेका सीज़न में रबी वारी सीज़न में कुझु स्प्रे करायो हो, जंहिंमें सिंध गवर्नमेंट इहा ॻाल्हि जेका सा कुझु वधीक जेको ज़राइत थियो आहे उन ई पुर चयो आहे त सिंध अंदरि 1,68,701 एकड़ ज़रई ज़मीन माकड़ सबबु मुतासिर थी आहे, ऐं ज़राइत जे पुठि इहो चयो आहे त सिंध जे 15 ज़िलनि जी 50,000 चौरस किलोमीटर इलाइक़े में माकड़ पकिड़ियल आहिनि,
ऐं माकड़नि जो तइदाद रोज़ ब रोज़ वधी रहियो आहे। प्रोफेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आहे, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटियूं आहिनि, पर उन में असांखे हिकु ॻाल्हि ॿुधाईंदो वञा त 2013 में नेशनल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पॉलिसी अप्रूव थियल आहे। जेकॾहिं का बि आफ़त अचे थी त उनखे ख़तमु करण लाइ उन ई पॉलिसी जो सहारो वठी उन ते कंट्रोल कयो वञे। जॾहिं त इहो बि ॿुधाईंदो वञा त नेशनल एक्शन प्लान बि जोड़ियो वियो आहे फॉर सर्विलेंस एंड कंट्रोल ऑफ डेज़र्ट लोकल, जंहिंमें 220 खां 221 जी एसओपी डेवलप कया विया आहिनि त उन्हनि एसओपी ते उनखे कीअं कंट्रोल कयो वञे, कीअं मॉनिटर कयो वञे। हाणे सिचुएशन इहा पई थी आहे त हाणे मॉनसून जी सीज़न अचे पई ऐं पाण खे ख़बर खपे त डेज़र्ट लोकल जूं ॿ जेके ब्रीडिंग ठीकु आहे। इन ते असां मूनसून ते अचूं पिया। इस्माइल साहब, असां शहज़ाद नायो साहब खां बि ॼाण हासिल कंदासूं। शहज़ाद साहब, तव्हां दावा कई आहे त तव्हां वटि हिकिड़ी टेक्नोलॉजी आहे जंहिंसां जहाज़नि खां बग़ैर बि उहे स्प्रे थी सघनि था ऐं इहे माकड़ जेके आहिनि उनखे ख़ात्मो मुमकिन आहे। कहिड़ी टेक्नोलॉजी आहे तव्हां वटि? महिरबानी साईं। असल में असां जेको आहे असां वटि हिते अवेलेबल जेका टेक्नोलॉजी आहे उहा तमामु घणी ट्रेडिशनल आहे, जंहिंमें बूम स्प्रेयर, नैपसेक ऐं ॿिया कुझु ट्रेडिशनल स्प्रेयर आहे। माकड़ खे कंट्रोल करण जे लाइ जेका मेन बेसिक जेका टेक्नोलॉजी आहे उहा एरियल स्प्रे आहे, जंहिंमें प्लेन वग़ैरह या जेट्स वग़ैरह खपंदा आहिनि, उहा एरियल एप्लीकेशन थींदी आहे। उन खां पोइ जेको दुनिया में अल्टरनेट एरियल एप्लीकेशन जे लाइ मौजूदु आहे उहो UAV ड्रोन आहे, जेको एग्रीकल्चर ड्रोन आहे, जंहिंजे तहत असां माकड़ जो जेके वॾा झुंड आहिनि, कुटुंब आहिनि, उन्हनि जी जेका कुटुंबनि जी जेका पॉपुलेशन आहे उन्हनि खे असां रिड्यूस करे सघूं था हिन टेक्नोलॉजी सां। अच्छा, भले तव्हां वटि जंहिं टेक्नोलॉजी जो ज़िक्र कयो था पिया, इहो ॿियनि मुल्कनि में उनखे इस्तेमालु कतब आंदो वियो आहे? जी बिल्कुलु। इन में मेन असांजा जेको एक्सपेरिमेंट जेको चाइना जे हुबई प्रोविंस में लोकस जो अटैक थियो ड्यूरिंग मुंहिंजे रिसर्च वर्क, असां उते कुझु ट्रायल कंडक्ट कया। उन खां अलावा जेको आहे पाकिस्तान में बि कुझु ट्रायल कंडक्ट कया विया आहिनि अनऑफिशियली, ऐं उन खां अलावा ट्रायल बेसिस ते, ऐं उन खां अलावा जेको आहे अफ्रीका जे कुझु कंट्रीज़ में जेको आहे ट्रायल हलनि था पिया। उन सां गॾोगॾु जेको आहे इंडिया में बि जेको आहे लोकस जे हवाले सां जेको आहे इन्हनि ट्रायल जेके एक्सपेरिमेंट जेके ट्रायल आहिनि उहे कंडक्ट कया आहिनि। केतिरी लागत थी अचे इन जंहिं टेक्नोलॉजी जो अव्हां ज़िक्र पिया कयो हुन ते? ॾिसो सर, टेक्नोलॉजी छो त असां वटि हिकिड़ा कस्टम रूल्स आहिनि इम्पोर्ट ऐं एक्सपोर्ट्स जा। जेका टेक्नोलॉजी आहे उन जे लाइ ही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अवेलेबल न आहे, उन जे लाइ कुझु SOPs ऐं रूल्स वग़ैरह फिक्स करणा पवंदा। उन जे करे एक्ज़ैक्ट जेका अमाउंट आहे या जेको चइजे त जेका रक़म ख़र्च थींदी उनजो तख़मीनो नथो लॻाए सघिजे फ़िलहाल। शहज़ाद, तव्हां जंहिं टेक्नोलॉजी जो ज़िक्र कयो पिया, असां उमेद था कयूं त सिंध हुकूमत इन जो नोटिस वठंदी ऐं इन टेक्नोलॉजी खां जेको आहे फ़ाइदो हासिलु कंदी ऐं माकड़ जे ख़ात्मे लाइ यकीनन इन टेक्नोलॉजी जे इस्तेमाल जे लाइ बि उहो कंदी। हिकु दफ़ो ॿीहर असां इस्माइल साहब वटि हलूं पिया। इस्माइल साहब, मूनसून जी सीज़न शुरू थियण वारी आहे ऐं अंदेशो कयो पियो वञे त मूनसून जी सीज़न खां पोइ माकड़ में जेको आहे उहो इज़ाफ़ो थींदो ऐं उन जे 400 गुना जेको आहे उहो माकड़ वधी सघे थी। कीअं था ॾिसो इन तमामु तर मामले खे? हुकूमत खे छा करणु घुरिजे? हिकमत अमली कहिड़ी विझणु घुरिजे? साईं, एग्ज़ैक्टली इहा ई ॻाल्हि आहे त मॉनसून जी जेका सीज़न आहे उहा मोस्ट फेवरेबल सीज़न आहे हिन माकड़ जे लाइ। सही। ऐं हूअं बि पाकिस्तान में जेकर ॾिठो वञे त डेज़र्ट लोकस जे हवाले सां 2 ब्रीडिंग सीज़न्स आहिनि। हिकिड़ी विंटर स्प्रिंग ब्रीडिंग सीज़न आहे जेका जनवरी खां जून ताईं शुरू थिए थी, ऐं ॿी वरी जेका असां समर मॉनसून ब्रीडिंग सीज़न आहे जेका जून खां डिसंबर ताईं थिए थी। हाणे हीअ महीनो आहे मई जो ख़तमु पियो थिए। हींअर कुझु जेके आलमी इदारनि खाधो खुराक करनि उन्हनि बि पंहिंजा तहफ़्ज़ात शुरू कया आहिनि त जेकॾहिं माकड़ ते कंट्रोल न कयो वियो त मुल्क में ॾुकारा जो सूरत पैदा थी सघे थी, फूड इनसिक्योरिटी जो मसइलो पैदा थी सघे थो। ऐं माकड़ खे खपे ग्रीनरी। हिन वक़्तु जेके ख़रीफ़ जो फसल आहे असांजो, उहो बि असांजो जेको रबी जे फसल ते अटे कयो, पर ख़रीफ़ वारे फसल असांजो मुतासिर थी रहियो आहे। मॉनसून जी सीज़न जेका अचे पई जून जुलाई खां जेके बरसातूं शुरू थींदियूं त उन में हिन जे जेका असांजी 60% जेका डेज़र्ट एरिया आहे उहो सूटेबल आहे। ऐं हिन वक़्त में न सिर्फ़ु डेज़र्ट एरिया सिंध जी, पर सिंध जे जेके इंडस वैली वारा जेके प्लेन लैंड आहे उते जेके असांजी एग्रीकल्चर जेका ज़राअत आहे उहा बुरी तरह मुतासिर थी आहे, पर गॾोगॾु बारानी जेका ज़राअत आहे उहा मुतासिर थी आहे। त हाणे हुकूमत खे जेकॾहिं 2 शयूं आहिनि, हिकिड़ो त लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन आहे। अच्छा। ऐं ॿियो तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो वञा त हिकिड़ी तहक़ीक़ आई आहे त 1 स्क्वायर किलोमीटर जेकॾहिं लोकस्ट जो कटक किथे माना अटैक करे थो, हमलो करे थो फसलनि ते,
त उहो घटि में घटि 25,000 माण्हुनि जी खाध खुराक माना जज़ब करे थो, हिकिड़ो कटक जेको वॾे में वॾो जेको आहे। त हीअ ॾींहं जो सफ़र कंदो आहे ऐं शाम जो वेंदो आहे। त गवर्नमेंट खे खपे ॿ शयूं, हिकिड़ो त जेकर नंढे स्केल ते आहे त उते बूम स्प्रे जे ज़रिए असां ख़तमु करे सघूं था। साईं इस्माइल कुबर साहब, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां असांखे टाइम ॾिनो। छाकाणि त माकड़ जो हमिलो ज़रई पैदावार ते हमिलो आहे, इन जो सभ खां वॾो जेको नुक़सानु आहे उहो ज़राअत सां लाॻापियल माण्हुनि जो आहे, हारियुनि जो आहे, कुड़मियुनि जो आहे, आबादगारनि जो आहे। ऐं हिन वक़्तु असां सां गॾु प्रोग्राम में शामिल आहिनि आबादगारनि जा अॻवान साईं महमूद नवाज़ शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाह साहब, इहो ॿुधायो त वफ़ाक़ ऐं सूबे जे विच में जेको तकरार हले पियो माकड़ जे हवाले सां, उन में आबादगार छा थो सोचे? त आबादगार छा इहा ॻाल्हि मञण लाइ तयारु आहे त वफ़ाक़ मदद नथो करे, असां वटि वसाइल कोन्हनि, इन करे वहार नथी थी सघे माकड़ जी वारी सूरत हाल में? ॾिसो, इन सिलसिले में असां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿारहा चऊं पिया त 2019 जे मई जे महीने में इहा माकड़ सिंध में ॾिसण में आई हुई, ऐं इन जो मतिलबु आहे त पाकिस्तान में इहा माकड़ उन महीने खां पहिरीं आई हुई। हा, उन खां अॼु ताईं हीउ 13हों महीनो आहे, पाण वटि वरी मई हले पियो 13हों महीनो। त इहे ख़बरूं तव्हां असां पोयनि 8-9 महीननि में वफ़ाक़ जे नुमाइंदनि सां ॻाल्हायो या सूबे जे नुमाइंदनि सां ॻाल्हायो त हू बार बार हर जाइ ते हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदा आया आहिनि त साईं असां हेतिरा 1000 लीटर हिते आणे ॾिना, हिते स्प्रे कयोसीं, सभु शइ कईसीं, हेतिरा 1000 हेक्टेयर असां पेस्टिसाइड हारे छॾियो। असांजो सुवालु सिर्फ़ु हिकिड़ो इहो आहे त जे एतिरो अरसो तव्हां हीउ सभु कमु कंदा रहिया आहियो त हीअ माकड़ जेका आहे सा FAO चवे थी, हीअ पाण बि चवनि था त हीअ असांजी लोकल माकड़ आहे। त हीअ एॾी माकड़ में वाध जेका आहे सा इहा कीअं थी वई अगरि तव्हां इहे एतिरा स्प्रे कया आहिनि? ॾिसो, अकुल ऐं सम्झ छा थो चए, उहो त इहो थो चए त जे अगरि पोएं साल माकड़ हुई ऐं तव्हां उन कंट्रोल कयो त हिन साल पोएं साल खां त घटि हुजणु खपे न, 4 आना 8 आना कुझु न कुझु त घटि हुजे न। ईअं कीअं थो थी सघे जे रुपयो हुई माकड़ पोएं साल त हिन साल थी वई 20 रुपया माकड़? इन जो मतिलबु त इहो थियो त तव्हां जेका बि शइ कई आहे उनजो को असरु कोन थियो आहे, पहिरीं नंबर ॻाल्हि। ॿिए नंबर ॻाल्हि, अॼु बि तव्हां ॻाल्हायो त वफ़ाक़ जे मौक़ुफ़ में ऐं सूबे जे मौक़ुफ़ में तज़ाद आहे ऐं हिक ॿिए खे जेको आहे सो चवनि था त हीअ ग़लति आहे, हीअ सही आहे। असां चऊं था घणो रोल वफ़ाक़ जो आहे, बिल्कुलु घणो रोल वफ़ाक़ जो इन करे आहे छो त हीउ बैन सूबाई ऐं बैन अक़वामी मसइलो आहे। पर 18th अमेंडमेंट खां पोइ अगरि हीउ सॼो ज़राअत ते असरु थिए थो, फूड सिक्योरिटी ते असरु थिए थो, त उनजो असरु तव्हां ते आहे त उनजो इक़दाम बि तव्हांखे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां खणणा आहिनि। हाणे हिकिड़े पासे हिकु तज़ाद, ॿिया इहे फैक्ट्स ऐं फिगर, इहो असांजो कंसर्न ऐं जेका असांजी परेशानी आहे इन में घणी हिकांदी वाध जेका आहे ऐं जेको ख़तरो आहे इन जो, इहो इन करे वधे थो सिर्फ़ु इन्हनि ख़बरुनि जे करे। सही। अच्छा शाह साहब, छाकाणि त 18वीं तरमीम बिल्कुलु आहे ई आहे, पर हू चवनि था त जेको रेगिस्तानी बेल्ट आहे उन में हर सूरत में वफ़ाक़ खे ई स्प्रे करिणो आहे ऐं सिंध हुकूमत चवे थी त असां वटि त जहाज़ आहिनि ई कोन, जहाज़ वरी बि सिविल एविएशन जो इदारो वफ़ाक़ खे आहे ऐं वफ़ाक़ खे ई ॾियणो आहे। ॾिसो, तव्हां हिन में कयूं ॿ ॻाल्हियूं, इहे असां सां ॿी साॻियूं ॻाल्हियूं था कनि। आया तव्हां ॻाल्हि करियो पिया शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सिस जी, या तव्हां ॻाल्हि करियो पिया तव्हांजी ज़िमेदारी कान्हे? जे तव्हांजी ज़िमेदारी कान्हे त पोइ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सिस जी त ॻाल्हि न करणु खपे। जे तव्हां शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सिस जी ॻाल्हि इहो करियो पिया, इन जो मतिलबु इहो पिया चओ त तव्हांजो कमु बराबरि आहे। असांजो चवणु इन में सॼी ॻाल्हि में ईअं आहे त जॾहिं एमरजेंसी जी सूरत हाल ईंदी आहे त तव्हां उन में फ़िलहालु एमरजेंसी में उहो कमु पूरो करण जी कोशिशि कंदा आहियो, पोइ तव्हां ॿियनि शयुनि खे प्लग करण जी कोशिशि कंदा आहियो। जे अगरि सिंध जी डेवलपमेंट जी बजट 150 खां 300 अरब रुपया पोयनि सालनि में रही आहे त इन मां छा इहो मुमकिन पोयनि 13-14 महीननि में न हो त की हिकिड़ो ॿ जहाज़ वठिजनि हा, अगरि स्प्रे लाइ को प्रोग्राम ठाहिजे हा, ऐं पोइ तव्हां वफ़ाक़ सां डिमांड कंदा रहो, चवां था हीअ असां तव्हांजी मदद में ख़र्च कया, हीअ असांजी फूड सिक्योरिटी जे लाइ मसइलो पे क्रिएट थियो, छो त तव्हां इहो इक़दाम न खयां, असांखे मजबूरी में खणा पिया, इहे असांखे पैसा जेके आहिनि से वधाए ॾियो। भला जे उहे पैसा न बि खणी ॾिना ऐं ख़र्च थिए हा खणी, त हिन में कहिड़ो मज़ाइको हो, कहिड़ो को मसइलो हो, ॿ रोड खणी घटि ठहनि हा या को मसइलो थिए हा, कहिड़ो ॻाल्हि थिए हा। हिन वक़्तु त तव्हां किरोड़े माण्हुनि जो फूड सिक्योरिटी दाव ते लॻाए छॾी आहे, छो त वफ़ाक़ कुझु कोन कयो, असांखे सिर्फ़ु शिकायत इहा आहे। सही। अच्छा शाह साहब, पंजाब में भी माकड़ या साॻा ई हमला आहिनि, त उते जेको स्प्रे पियो थिए उहो छा वफ़ाक़ी हुकूमत पई कराए या सूबाई हुकूमत पई कराए? ॾिसो, असांजी नॉलेज में जेका आहे पंजाब, अवां आबादगार बोर्ड में आहियो, उतां जा आबादगार बोर्ड सां यकीनन तव्हांजा राब्ता हूंदा।
साईं असांखे जेका पंजाब जी ख़बर पई त पंजाब में बि सूरत हाल पंहिंजे सिंध वारी अथनाव। पंजाब में बि जेका इन्फेस्टेशन ऐं नुक़सानु थिए पियो सो पाण वारो आहे। पंजाब में बि पोयां 12-13 महीना हू पाण सिंधीअ में चवंदा आहियूं हल त अचां थो। सो इहे 12-13 महीननि में इहे हल त अचां थो वारियूं ख़बरूं त हिते बि अंग्रेज़ीअ में वरी चवंदा आहिनि त लुक बिज़ी डू नथिंग, त हीअ बि करियूं पिया हू बि करियूं पिया, पर सरज़मीन ते उते बि असांखे कंट्रोल कोन्हे। हिकिड़ी ॻाल्हि ॾिसो सूबे जी जेका 100% सही आहे, जेका असीं बि इन ॻाल्हि सां एग्री था करियूं त इन जो कंट्रोल फील्ड में न आहे थियणो, इन जो कंट्रोल हिकिड़ी ॾाढी विंडो इन जी घटि आहे, उहा आहे इन जो कंट्रोल डेज़र्ट में थियणो आहे या बलोचिस्तान में थियणो आहे, जिते हुन जा अञा पर न ईंदा आहिनि या जिते बेदा लाहींदो आहे ऐं वेहंदो आहे, उते 30 खां 50 ॾींहं हूंदा आहिनि जिते तव्हां कंट्रोल करे सघो था। हाणे इहो वफ़ाक़ जी पटी आहे, हिननि जी पटी कान्हे, पर इहो पाण में वेही फ़ैसिलो कनि न। इहो को चांडियन ऐं मक्सनि जो जहिड़ो त कोन्हे त इहो खून थी पोइ हल थियणो आहे। इहो त सरकार खे सीरियसली पाण में वेही पाण में तकरार खे सेट करे इन खां अॻियां वधणो आहे। इन जी आख़िर इहा न आहे त इहो वफ़ाक़ जो टुकड़ो आहे या इहो सूबे जो टुकड़ो आहे। अच्छा शाह साहब इहो ॿुधाइजो त हिन वक़्त ताईं जंहिं टाइम असां ऐं तव्हां मुखातिब आहियूं उन वक़्त ताईं सिंध जी ज़रई पैदावार जो माकड़ केतिरो नुक़सानु कयो आहे? अव्हां सर्वे कया आहिनि, रिपोर्ट्स आहिनि अव्हां वटि, केतिरो नुक़सानु थी चुको आहे? साईं आऊं त जिन ज़मींदारनि सां ॻाल्हायां थो हिन वक़्तु को बि माण्हू इलाइक़ो ख़ाली न थनाव जंहिंजो घटि या वधि नुक़सानु न थियो हुजे। ऐं तव्हांखे कल्ह खां वठी ज़िला थो ॿुधायां, ज़िलो दादू हुजे, ज़िलो बेनज़ीराबाद हुजे, ज़िलो मटियारी हुजे, ज़िलो टंडो लयार हुजे, ज़िलो मीरपुर ख़ासि हुजे, इन्हनि 5-6 अच्छा मथे जेके उत्तर जा 2 टे ज़िला आहिनि जंहिंमें कंदकोट ऐं जैकमाबाद इन एनडीए में पंहिंजी रिपोर्ट में 9 अज़ला ॿुधाया आहिनि सिंध जा जेके इम्पैक्टेड आहिनि। 9 ज़िलनि जो मतिलबु इहो आहे मोर देन 50% ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ सिंध। इन जो मक़सदु त इहो असीं चई सघूं था त 50% जिन एरियानि ते अगरि इन्फेक्टेड आहे त उते को दुआ कान पई पड़े, उते नुक़सानु पई करे। माण्हुनि फुटिन जा ॿिज 2-2-3 दफ़ा हिन वक़्तु पोखे चुका आहिनि। फुटी पाण वटि सिंध में तक़रीबन 19 खां 20 लख एकड़ थिए थी। माण्हुनि जे बाग़नि खे नुक़सानु पहुतो आहे, माण्हुनि जी भाॼियुनि खे नुक़सानु पहुता आहिनि, माण्हुनि जा गाह पोखियल आहिनि उन्हनि खे नुक़सानु पहुता आहिनि। त वाइड स्प्रेड नुक़सानु थियल आहे। इहो डैमेज असेसमेंट करणु 101% गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो कमु आहे ऐं उहो डैमेज असेसमेंट इन्हनि खे फिल फौरी करे ऐं ॿुधाइणु खपे त ज़मींदारनि जो पोयां जेके 12-13 महीना में कहिड़े क़िस्म जो नुक़सानु। आऊं सम्झां थो त इहो नुक़सानु जेको थियो हूंदो इहो 7 अरबनि में हूंदो जेको हिन वक़्त ताईं नुक़सानु थी चुको हूंदो। अच्छा शाह साहब असांजे गुज़िरियल प्रोग्राम में मिनिस्टर साहब इहो दावा कयो त असां एमरजेंसी सेंटर क़ाइमु कया आहिनि जेके मुतहरिक आहिनि। तव्हां फील्ड में आहियो, तव्हांखे उहे एमरजेंसी सेंटर्स मुतहरिक नज़र अचनि पिया माकड़ जी रोकथाम लाइ? ॾिसो असांखे जेका कुझु हिन जूं गाॾियूं ऐं कुझु सेंटर्स जे बारे में असां ख़बर बहरहाल ॿुधी आहे त उहे शयूं हिननि जूं मौजूदु आहिनि, पर हर फील्ड में हिननि गाॾियूं वरितियूं आहिनि, ड्रम वरिता अथनि ऐं हिननि पंहिंजे स्प्रेज वरिता आहिनि, पर अञा ताईं जेको फील्ड में हिननि खे पाण वञी कमु करणु खपे उन में थोरो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आहिनि जेके उनखे वधीक एक्टिवेट करणा खपनि। ऐं असांजो सुवालु वरी बि इहो आहे त उहे जेके आहिनि से एडहॉक मेजर्स आहिनि, इन्हनि सां माकड़ कंट्रोल न थींदी। हा ओॾी महिल तव्हां भॼाए छॾींदो 4 एकड़नि तां, पर माकड़ कंट्रोल कान थींदी। माकड़ वरी बि कंट्रोल थींदी मॉनसून ऐं उन खां पहिरीं जे ख़ुदा न ख़ास्ता इहे बरसातूं पइजो थियूं वञनि त हीअ माकड़ जेका तमामु ख़तरनाक सूरत हाल में अची वेंदी। हिन जी जेका आहे वाद अथनाव जीअं मैथमेटिक्स में वंड कबी आहे न 2 into 2 4, 4 into 4 16, 16 into 16 32 ईअं वधंदी अथनाव। ही तक़रीबन 30 ॾींहं मेच्योरिटी खे लॻाईंदो आहे ऐं पोइ जेका फीमेल वरी 35-40 ॾींहंनि खां पोइ बेदा लाहे थी उहे वरी 250 खां 300 लाहे थी। तव्हां ईअं था चओ त मॉनसून जी बरसातुनि खां पहिरियां एनी हाउ एयर स्प्रे थियणु घुरिजे? एक्ज़ैक्टली थियणु खपे। ॾिसो किन जाइनि ते तव्हां एरियल स्प्रे करे सघो था। असां हिननि खे 2 टे गुज़ारिशूं कयूं आहिनि कल्हो के प्रेस नोट में। पहिरीं असां हिन खे चयो आहे तव्हां एयर स्प्रे करियो, जिन जाइनि ते हेठि आबादी आहे तव्हां ड्रोन्स ऐं ॿी टेक्नोलॉजी करियो। 3 नंबर ते अॼुकल्ह हुनजी बेदा तबाह करण जे लाइ जिन खे ओवी साइट चवनि था
उहे उन्हनि जे थ्रू बेदनि जे थ्रू कंट्रोल करणु खपे ऐं ट्रैप करण जे लाइ कुझु हिननि खे पंहिंजो लॻाइणु खपे ऐं वफ़ाक़ खे स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करणु खपे त हीउ रीजनल मसइलो आहे, इन खे तव्हां रीजन में कंट्रोल करियो। ऐं शहज़ाद नाईअ जहिड़ा अगरि एक्सपर्ट्स पाण वटि वेठल आहिनि त उन नौजवाननि खे पंहिंजे पूल ऑफ एक्सपर्ट्स में खणनि त ही उनखे मारणु, उनखे रोकणु ऐं कंट्रोल करणु हिकिड़ी साइंस आहे, उन साइंस खे फॉलो कनि, न त ही कंट्रोल में न ईंदो। अच्छा शाह साहब, असांजे ई प्रोग्राम में मिनिस्टर साहब इहा वाज़े चयो हो त जिन जिन आबादगार जिन जिन हारियुनि जो नुक़सानु थींदो असां उनजो अज़ालो कंदासीं। अवां इन हवाले सां मिनिस्टर साहब सां का मीटिंग कई आहे, का लिस्ट ॾिनी आहे त एतिरो नुक़सानु थियो आहे ऐं हाणे उन्हनि मिसकिन हारियुनि जो कुड़मियुनि जो अज़ालो कयो वञे? ॾिसो, असां पोयनि 8 महीननि खां चऊं पिया त सरकार खे डैमेज असेसमेंट करणु खपे। असांजो मौक़िफ़ अनऑफिशियल आहे, असांजो मौक़िफ़ सरकार जो पंहिंजो आहे तो मञे या न मञे, पर असीं चऊं पिया त उहो सरकार खे डैमेज असेसमेंट करणु खपे। लॉस पैसा अलाह थो ॾे या नथो ॾे उहा हिकु अलॻि ऐं पोइ जी ॻाल्हि आहे, पर जे गवर्नमेंट ऑफ साईं मुंहिंजा न डैमेज असेसमेंट अञा तइ कई आहे, न ई उन जे लाइ को कैबिनेट मां मंज़ूरी वरिती आहे, त इहा असांजी नज़र में त इन ॻाल्हि जी वैल्यू तॾहिं ई थींदी जॾहिं हिनखे अमली जामो पारायो वेंदो। बाक़ी उन बिना ते अठली ॻाल्हि हवा में ई आहे, उनजो को मसरफ़ कोन थींदो। वॾी महिरबानी शाह साहब असांखे टाइम ॾियण। मुल्क में कोरोना ते कंट्रोल नाहे थी सघियो। हिन वक़्तु जंहिं मां असां मुखातिब आहियां उन वक़्तु मरीज़नि जो तादादु तक़रीबन 64,000 खां किरास करे चुको आहे। ॿिए पासे असां ॾिसूं था पिया त इस्पतालुनि जी में का कोरोना जे मरीज़नि जी जेका गुंजाइश आहे उहा बि हाणे ख़तमु थींदी वञे पई। मुल्क में एंटीबॉडी टेस्टिंग जो आगाज़ थी चुको आहे। इन खां पहिरियां ब्लड प्लाज़्मा जो पिणु इलाजु जेको आहे उहो थी चुको आहे। इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असां सां गॾु प्रोग्राम में शामिल आहिनि मारूफ़ डॉक्टर शमसी साहब। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये एंटीबॉडी टेस्टिंग है क्या और इससे क्या फ़ायदे होंगे कोरोना के मरीज़ों को? जनाब, एंटीबॉडी टेस्टिंग कोरोना की इस पेंडेमिक के दौरान बेहद अहम किरदार अदा करेगी। तो जो लोग जिनको कभी कोरोना नहीं हुआ, आवाम की बात कर रहा हूँ, तो वो अपना एंटीबॉडी टेस्ट NIPD आके करा सकते हैं। और अगर एंटीबॉडी टेस्ट में ये एंटीबॉडी डिटेक्ट हो जाती है तो उसका मतलब है कि उन अनजाने में कोरोना हुआ था और उनके जिस्म ने उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़अत पैदा कर दी, और अब वो सेफ है। और अब उस सेफ्टी की वजह से अब उनको दोबारा कोरोना होने का खदशा कम है। और अपने काम पे आराम से जा सकते हैं। उनके ऊपर लॉकडाउन की पाबंदियाँ जरूरी नहीं संभल की जाएंगी। सबसे बड़ा फायदा ये। और जो नेगेटिव बातें एंटीबॉडी जिन्होंने नहीं बनाई उनको कोरोना होने का खदशा बरकरार रहेगा। और ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है जो हुकूमत ने आखिरकार 3 महीने के बाद इस बात की इजाज़त दे दी कि एंटीबॉडी टेस्ट करा के और हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे जिस्म में एंटीबॉडी या कुव्वत मुदाफ़अत बनी है या नहीं बनी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कराची में किन किन सेंटर्स पे ये टेस्टिंग होगी और कितने दिनों में इसका रिजल्ट आ जाएगा? ये इंशाल्लाह ताला ये पूरे मुल्क की लेबॉरेटरीज में इसकी टेस्टिंग की सहूलत आ जाएगी और शुरू हो चुकी है। बहुत सारी जो बड़ी लेबॉरेटरीज हैं वो ऑलरेडी कर रही हैं और शुरू कर दिया है जैसी इजाज़त मिली है उन्होंने। और ये इसकी रिपोर्ट अमूमी तौर पे एक दिन में या मैक्सिमम 2 दिनों में ये रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा, और दूसरा डॉक्टर साहब, ब्लड प्लाज्मा के हवाले से भी बात हो रही है कि उसके एहतियात के हवाले से अपील की जा रही है। बताइए कि ब्लड प्लाज्मा का इलाज क्या है? जो लोग कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं उनके जिस्म में कोरोना के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो जाती है। और जो लोग जिनको कोरोना होता है और ज़्यादा शदीद बीमार अगर हो जाते हैं तो ये वो लोग होते हैं जिनकी कुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर होती है। तो वो लोग जो रिकवर हो चुके हैं उनके जिस्म की कुव्वत मुदाफ़अत उनके खून में पानी जो होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं उसमें मौजूद होती है। तो वो प्लाज्मा हम निकालते हैं और ज़्यादा शदीद बीमार इंसान के जिस्म में मुंतकिल कर देते हैं। उससे उस आदमी की रिकवरी होना शुरू हो जाती है। और अगर मैं आपको यहाँ जो हमारे पास जो क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है पाकिस्तान में उसके अगर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊं तो 86% में मरीजों में जिनको प्लाज्मा दिया गया उनको वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और वो रिकवर होना शुरू हो गए और बहुत से लोग घर चले गए, कुछ अभी भी रिकवर हो रहे हैं।
جبکہ وینٹیلیٹر اس کے لیے اتنی پریشان کن اس کے نتائج ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ جو لوگ گئے ان میں سے 90% تک دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے آئی سی یو میں بھی ان میں ریکوری نہیں ہوتی اور ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو وینٹیلیٹر سے بچانا بے حد ضروری ہے اور اس کے لیے پلازما ایک واحد علاج ابھر کر سامنے آ رہا ہے پوری دنیا میں کہ جس سے جانیں بھی بچ رہی ہیں اور ریکوری بھی بہتر طریقے سے ہو رہی ہے. جی اب جو ہے اب پورے پاکستان میں پلازما کو پہنچانے کا گورنمنٹ نے انتظام کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو, اور یہ اجازت دینی پڑے گی کہ اس کو ایک ٹریٹمنٹ کے طور پہ, علاج کے طور پہ کہ پاکستان کے ہر شہری کو دستیاب ہو جائے. اس کا بندوبست ہماری صوبائی حکومتوں کو بھی کرنا پڑے گا اور فیڈرل گورنمنٹ کو اس کی پرمیشن دینی پڑے گی. جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کو اس کی پرمیشن دینی پڑے گی, تب جا کے یہ لوگوں کی جانیں بچنا شروع ہوں گی. ورنہ جیسے جیسے کیسز بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے اللہ نہ کرے اموات کی شرح میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو اینٹی باڈی ٹیسٹنگ ہے اس میں اگر 50 سال سے عمر کے جو بزرگ افراد ہیں ان میں بھی اگر پہلی مرتبہ ہو چکا ہے کرونا تو کیا دوبارہ ان کو اس پر اثر نہیں ہوگا؟ جی نہیں, اس میں اینٹی باڈی بننے کے بعد عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کے جسم کا قوت مدافعت کا نظام ایک دفعہ ایکسپوجر کے بعد کسی وائرس کے خلاف دوبارہ اس کو عام طور پہ بہتر طریقے سے کنٹرول کر لیتا ہے, اس کی پریونشن کر لیتا ہے. لیکن اگر وہ خود کمزور ہو جائے, کسی وجہ سے ان کو کینسر ہو جائے, شوگر ہو جائے یا قوت مدافعت کو کمزور کرنے والی اگر دوا شروع کرا دی ہو تو دوبارہ کورونا وائرس یا کوئی بھی انفیکشن دوبارہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ایبسولوٹ پروٹیکشن نہیں ہوتی اینٹی باڈی بننے کے بعد, ریلیٹو پروٹیکشن یقینی طور پہ ہو جاتی ہے, بڑی عمر ہو یا چھوٹی عمر ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کرونا کے اس بڑی تعداد میں نہیں پھیلا اور اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اس کی جو کیٹیگری ہے وہ کرونا یہاں پہ سی کیٹیگری کا ہے. تو کیا آپ ڈاکٹر بھی ہیں تو کرونا کیا واقعی یہاں پہ سی کیٹیگری کا ہے؟ تو پھر اے کیٹیگری اور بی کیٹیگری کرونا کی کون سی تھی؟ علم تو نہیں, میں آپ سے پہلی مرتبہ اے بی سی کل ایک اسمبلی کے ممبر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں پہ کرونا سی کیٹیگری کا ہے, اس لیے یہاں پہ لاک ڈاؤن میں سختی نہ کی جائے. اچھا, میں یہ ڈاکٹر میں یہ ٹرمینالوجی پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. یہ میری کم علمی ہے کہ مجھے ابھی تک نہیں پتا تھا یہ, لیکن یہ یقینی ہے کہ ہمارے یہاں اس قسم سے اتنی تعداد میں اموات نہیں ہو رہی, فوتگیاں نہیں ہو رہی جتنے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں یا یورپین ممالک میں دیکھی گئی ہیں. کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اس کا علم ابھی شاید کسی کو بھی نہ ہو. بہت سے لوگوں کے اندازے ہیں کہ جن اندازوں کی بنا پر کوئی آدمی کچھ اس کی وجہ بتاتا ہے, کوئی آدمی کچھ وجہ بتاتا ہے. صحیح صورتحال تو شاید کچھ عرصے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, 2 دن کے بعد حکومت فیصلہ کرے گی کہ ان کو لاک ڈاؤن میں سختی کرنی چاہیے یا پھر لاک ڈاؤن میں نرمی برقرار جو ہے وہ ایز اٹ از ہونے چاہیے. آپ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے حکومت کو کیا سجیشنز دیں گے کہ کرونا جب 10,000 پیشنٹس تھے تو انہوں نے لاک ڈاؤن سخت کر دیا ہے, اب 64,000 پیشنٹ بن چکے ہیں, تو کیا لاک ڈاؤن میں سختی ہونی چاہیے یا پھر جیسے ہی کام چل رہا ہے ویسے چلنا چاہیے؟ دیکھیے, اب یہ کورونا جس حد تک پھیل چکا ہے پورے معاشرے میں, اب وہ کرفیو لگا دیں, لاک ڈاؤن, لوگوں کو زنجیروں میں باندھ کے بٹھا دیں, کچھ بھی کر لیں, اب جو پھیلنا تھا وہ پھیل چکا ہے اور وہ پھیلتا چلا جائے گا. اچھا, صرف اس کی رفتار میں کمی بیشی ہوگی کہ اگر کھڑا رہے گا اس طریقے سے تو بہت زیادہ رفتار ہوگی, اور کر دیا تو شاید اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. اچھا, تو مطلب لاک ڈاؤن کا یا کرفیو کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ بہت دیر ہو گئی ہے, ہم نے اپنے بہنچے پہ قوم اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے. اچھا, اور اب اپنے اوپر ظلم کر کے اور اس بات کو ڈینائل میں کہ نہیں یہاں تو آئے گا نہیں یا ہے نہیں یا ہو نہیں سکتا اور یہ سب مذاق ہو رہا ہے, یہ ساری باتیں کر کے ہم نے, اور ابھی بھی آدھے سے زیادہ قوم جو ہے, آدھے سے زیادہ 80% لوگ کو ان کو یقین نہیں ہے کہ کورونا کوئی چیز ہوتی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں یہ سب بیوقوف بنا رہے ہیں, یہ سازش ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو اس دنیا سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور یہ اس دنیا سے تو ہر ایک کو چلے جانا ہے, لیکن جو میزریبل جتنی تکلیف دے صورتحال ہونے کے بعد یہ لوگ رخصت ہوتے ہیں اس دنیا سے, وہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے, کسی کو ایسی موت نصیب نہ کرے.
صحیح. ڈاکٹر صاحب اسپتالوں کی کیا صورتحال ہے کہ خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سے ڈاکٹر جو ہیں وہ خود کورونا کے متاثرین میں شامل ہیں. اگر یہی رفتار رہی, لاک ڈاؤن میں نرمی رہی, تو پھر کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کس طرح کی صورتحال ہوگی؟ آنے والے دنوں میں خدشہ یہ ہے کہ ہسپتال کے وہ ابھی یہ جو جگہ ختم ہونے والی جو بات ہو رہی ہے, یہ ان بستروں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کورونا کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں. ہر ہسپتال اب ہوگا یہ کہ آنے والے وقت میں ہر چھوٹے بڑے ہسپتال میں ہر قسم کے جو مریض ہیں, ہر قسم کی بیماریوں کے مریض ہیں, ان کے لیے جگہ ختم ہو جائے گی, اور صرف ہر بستر کے اوپر, فٹ پاتھ کے اوپر, کوریڈور کے اندر یہ مریض جو ہیں کورونا والے وہ لیٹے ہوئے ہوں گے. اچھا. اور ایک ایک بستر کے پیچھے 10 لوگ لڑ رہے ہوں گے کہ میرے مریض کو لٹاؤ, میرے مریض کو پہلے لٹاؤ, اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے. یہ وہی چیز جو اٹلی میں, امریکہ میں, اٹلی میں خاص طور پہ جو ہوئی وہ یہی اسی قسم کی صورتحال ہو گئی تھی وہاں. تو یہ نہ ہو, یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شمسیہ میں وقت دینے کے لیے. شہید عزیز میمن کے قتل کیس میں اج اہم پیشرفت تھی ہے. پولیس مکھ جوابدار سمیت 15 ॼणनि खे गिरफ़्तार कयो आहे, जॾहिं त अज़ीज़ सतो नामे जेको मुलज़िम आहे उन जो DNA भी मैच थी वियो आहे ऐं उन इन ॻाल्हि जो एतिराफ़ भी कयो आहे त हू शहीद अज़ीज़ मेमन जे क़त्ल में मुलविस आहे. ॿिए पासे अॼु एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयो आहे त शहीद अज़ीज़ मेमन जे क़त्ल में जेको मास्टर माइंड आहे उन जो नालो मुश्ताक सहतो आहे, जेको हिन वक़्त ताईं फ़रार आहे ऐं पुलिस उन जे ख़िलाफ़ उन खे पकड़ण जे लाइक़ु आहे उहा कार्रवाई पंहिंजी जारी रखी आहे. हिन वक़्तु असां सां गॾु प्रोग्राम में मौजूदु आहे शहीद अज़ीज़ मेमन जो भाउ मोहतरम हफ़ीज़ मेमन साहब. हफ़ीज़ मेमन साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अच्छा हफ़ीज़ मेमन साहब, इहो ॿुधायो त अॼु जेके गिरफ़्तार थिया आहिनि ऐं जेको DNA टेस्ट मैच थियो आहे ऐं पुलिस जी जेका हिन वक़्त ताईं जेका कार्रवाई आहे उन मां अव्हां केतिरा सेटिस्फाई आहे? हींअर ताईं ॾिसो न, असां अज़ीज़ साहब जो जेको क़त्ल हो उहो हिकिड़ो ब्लाइंड मर्डर हुयो. इहा ख़बर ई न पए त असल जेको आहे हिन में किलर या टारगेट किलर कहिड़ा आहिनि. मां सम्झां थो हिन अॼु ताईं इहा जेका हिकिड़ी वॾी प्रोग्रेस थी आहे त असांखे इहा ख़बर पई आहे त अज़ीज़ साहब जा क़ातिल केरु आहिनि. बक़ाया जेको IG साहब अॼु ॿुधायो, DIG साहब, त हिन जो प्लेनर जेको आहे उहो मुश्ताक सहतो आहे. मां सम्झां थो मुश्ताक सहत जे गिरफ़्तार थियण सां असांखे असुल जेके आहिनि उन जा वजूहात, असबाब, कारण मालूम थी सघंदा त आख़िर गुजात कहिड़ा आहिनि जिन अज़ीज़ साहब खे पंहिंजे सहाफ़ती लिंक्स सां हटायो आहे ऐं उनखे क़त्ल कयो आहे. अच्छा हफ़ीज़, इहो ॿुधाइजो त हीअ उहे ई हिन वक़्त ताईं जेका गिरफ़्तारियूं थियूं आहिनि कि DNA मैच थिया आहिनि, हीअ उहे ई आहिनि जिन्हनि जे लाइ शहीद अज़ीज़ मेमन पंहिंजी ज़िंदगी में ख़दशे इज़हार कयो त उहो क़त्ल थी सघे थो ऐं इन्हनि जे हथां गिरफ़्तार थी सघे थो? साईं, असल इहा त अज़ीज़ साहब पंहिंजे फेसबुक ID ते मुख़्तलिफ़ जेके पंहिंजा अनुमान ज़ाहिर कया हुआ, मां सम्झां थो उन्हनि मां हिकु अधु माण्हू त हिन में शामिल आहे. बक़ाया ॿिया माण्हू पस मंज़र ते अचनि त ख़बर आहे कहिड़ा आहिनि. ऐं अज़ीज़ साहब जेका हिकिड़े जनरल जेको न उहो पंहिंजी जेके डाइंग स्टेटमेंट जेको चवंदो रहियो आहे, आउं सम्झां थो त जेकॾहिं मुख्य क़ातिल गिरफ़्तार थी वियो त असांखे काफ़ी शइ जी जेका अञा ख़बर नथी पए उहा उन में ज़ाहिर थी सघे. अच्छा, अव्हां जी पुलिस सां यकीनन ॻाल्हि ॿोल थी हूंदी. पुलिस छा थी चवे त उहा केतिरो वेझो आहिनि मुख्य जेको मास्टर माइंड आहे उनखे गिरफ़्तार करणु? हींअर ताईं त पुलिस पूरो उमेद आहे त असां इनशाला उनखे, छाकाणि त हाणे जेको आहे विदिन 8-10 ॾींहंनि जे अंदरि जेका प्रोग्रेस थी आहे उन मां महसूस थो थिए त पुलिस जेको आहे न पंहिंजे राइट ट्रैक ते अची वई आहे. ऐं जेकॾहिं मां सम्झां थो इहो पहिरियां ई थियणु घुरिजे हा, पर काफ़ी देरि थी आहे. पोइ चवंदा आहिनि त देरि आहे त दुरुस्त आहे. ऐं हिन वक़्तु पुलिस जेको कमु कयो आहे अॼु महसूस थियो त वाक़ई जेको असीं उन असुल मक़सद ताईं पहुची विया आहियूं. ऐं उमेदु आहे त मुश्ताक सहत जे गिरफ़्तारी में बि पुलिस जेके नेक जो मुज़ाहिरो कयो त मां सम्झां थो देरि न आहे. वॾी महिरबानी अब्दुल हफ़ीज़ असांखे वक़्तु ॾियण जी. नाज़रीन, असां पुरुमीद आहियूं त शहीद अज़ीज़ मेमन जा जेके क़ातिल आहिनि उहे गिरफ़्तार बि थींदा, उन्हनि खे सज़ाऊं बि थींदियूं ऐं शहीद जो हूअं बि जेको खून आहे उहो जेको आहे उहो ज़ाया न थींदो आहे. वक़्त जी तारीख़ हिन जी गवाह आहे. असां वरी बि पुरुमीद आहियूं त पुलिस जेका आहे हिन में पंहिंजो पुरजुस्तो किरदारु अदा करे ऐं मुख्य जेको जवाबदार आहे, जेको मास्टर माइंड आहे, उनखे गिरफ़्तार कंदी. हिन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो. मूंखे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह वाहे.